me open my Visual Studio Code. Then you have to open your project. Like last day, we have created some project. Motihari training I created, right? So now I am inside the project Motihari training. You can go to the folder, open folder, and you can open the folder from your local system जहाँ पे आपका project है. Okay. Now you can see Motihari training org is also listed here because previously we have authorized with this org. Remember in the previous training, we have already covered that authorization part. Now, if I click here, open org, then you already know from the previous session, like org will be opened from here. Which org? Our Salesforce org. Now, I'm going to write some Apex code. So if you remember previous session, go to script, up Apex, and here we have hello demo. Last time we have written this code. And लिखा था hello world obj equal to new hello world. ठीक है? Okay. Good thing is that this place is, अगर मैं इस कोड को रिमूव कर दूं और सिर्फ इसे प्रिंट कराऊं system.debug, if I click execute and Apex, आप यहाँ पे देख सकते हैं system.debug hello, line number 1 debug hello. You can see here, right? Debug 1 hello means, let me remove this. Okay. In programming, I hope many of you are already aware, if we need to hold some value, we need variable, right? I'm talking a very basic session. If you find this session helpful for you, it is a beginner session. Suppose I have to hold my name somewhere, then we write string name equal to Om Prakash. Okay. Suppose I need to hold number, then integer first number equal to maybe 10. Okay. I have to print this system.debug name here. And if I can write something in a string like this, name age plus, this is a string, name age, and then value of name will be printed. Similarly, I can print system.debug first number age, this first number. See, in this small piece of code, what we are doing, just we have assigned, hey, name equal to Om Prakash, and Om Prakash is plain text here. So for holding this, I have taken a string. This is number, first number equal to 10. This is variable name, and this is type of this variable, that's called integer, first number equal to 10. I'm going to print both variable here. And now let's click execute and then Apex. Let's see. If you look into debug log, you can see line number 5. Line number 5. Name is Om Prakash. Name is Om Prakash. First number is 10. First number is 10. So this is just a quick overview how variable assignment is working here. If you are already from Java development background or any programming language background, this is very, very basic for you. Maybe your first time looking on this code, then I can say you have to learn some more about the variables, data types. Okay, but here I am moving next. What I said, let me repeat. If you have to hold the string, I have declared a string name. Integer first number means I am assigning number. Okay. It might be possible we need to hold multiple names
means my name, your name. Then what you can do? You can do something string, maybe trainer name equal to Om Prakash, string student or maybe trainee name equal to trainee one someone. Okay, now think this is good. If I go and print this here, hey, trainer name is trainer name, right? Similarly, trainee name age, copy this, paste this. Okay, don't be confused. What I'm doing, just going to click copy here, I'm pasting here, but you can see, okay, trainer name is trainer name, trainee name is trainee name. That's fine. If I print this, you can see we are able to access trainer name is Om Prakash, trainee name is trainee one. Okay, no any concern till now. It's working. Now think, we have currently one trainer. I am Om Prakash giving you training. So I am good here. Trainer name equal to Om Prakash. But now we have currently multiple trainees, right? More than one trainee. So we have one option. Hey, copy this trainee name one, trainee one name, maybe trainee two name. Means if currently on this call I can see 27 people, means you have to declare 27 variable for assignment of each name. Let me see the name here. I can say Om Prakash, then Abhinandan here. So maybe I'm going to write trainee name one, Abhinandan, right? Then again trainee name two. If I go here, I can say Others Raj. Then I have to write here Others Raj. And now you can think, okay, we need to declare multiple variable for holding all the name, right? I hope you are getting me now. If 100 trainee, 100 variable, no. Here, we can hold all the name in one data type, and that is list. Means we will create a different data type, that's list. So let's talk about definition. What is, let me complete this first, okay? Otherwise, maybe some beginner can confuse. Copy this, paste this, trainee name two, trainee name, trainee, or maybe first trainee name, second trainee name is, okay? Let's execute this. See. First trainee name is Abhinandan, second trainee name is Others Raj. Nobody team, just I take a random name from the list. Okay. Now I'm going on the hold multiple trainees name in one variable. See how easy this is. List like this, list of trainee. I am giving my custom name LST, list of trainees equal to list, and here this is signature new list. Okay, list, I will type something here, list of trainee variable name equal to new list. Very similar, say string name equal to Om Prakash, integer first number equal to 10. Very similar, you can see list of trainee variable equal to new list of trainee. Here we need to initialize the list with new list. Now we have to think carefully here. In the list of trainee, what we are going to hold, हम इस लिस्ट में क्या रखने जा रहे हैं? हमने कहा ट्रेनीज के नेम को रखने जा रहे हैं. ट्रेनीज का नेम कैन बी अभिनंदन, कैन बी आदर्श, कैन बी नेक्स्ट नेम फ्रॉम यू, राइट? ओके, तो लिस्ट ऑफ ट्रेनी क्या रखने जा रहा है? व्हाट
आंसर इज स्ट्रिंग रखने जा रहा है। मीन्स दिस लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग, जब लिस्ट बनाने जा रहे हैं, दिस इज गोइंग टू होल्ड लिस्ट वेरिएबल, सॉरी, दिस इज गोइंग टू होल्ड स्ट्रिंग वेरिएबल। हाउ? मैंने कहा देखिए, अभी बहुत आपको आसान लग रहा होगा वेरी बिगिनिंग, बट समटाइम्स इन द डेटा डिक्लेरेशन वी नीड टू टेक अ कॉल। तो दिस इज कॉल्ड लिस्ट। किस टाइप का लिस्ट? तो लिस्ट हमारा नाम क्या है? स्ट्रिंग होता है ना, तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, एलएसटी ट्रेनिंग इक्वल टू, यहां भी सेम, मतलब हमने एक लिस्ट बनाया, लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। इस वेरिएबल का टाइप क्या हुआ? लिस्ट। वो लिस्ट क्या होल्ड करेगा? स्ट्रिंग। अब इस वेरिएबल के पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, इट कैन होल्ड मल्टीपल नेम। व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ सेम डेटा टाइप। Means list will hold multiple name, and all name either Abhinandan or others. Which type? String type. So this is list of string. How to use this list of string? I will come back. I can see some chat here. Let me read. When we declare variable, then again and again we will declare variable type without variable type not working in Apex. Maybe I'm not getting the question. Let me check. When we are declared variable, then again and again we declare variable type without variable. I'm not getting this question. Maybe you can type a little more for this, or maybe you can speak with me. When we are declaring variable, then again and again we will declare variable type without variable type. Maybe, sorry, maybe you want to say something, I'm not understanding. No worry, you can type again. Okay, that's fine. So as you understand, when you declare variable, here I am just declaring a variable, string name equal to this. Then I am also declaring integer first number equal to 10. Then I am also declaring some other variable. Okay. So this is declaration, this is initialization. यहाँ पे initialization हो रहा है, यहाँ पे declaration हो रहा है. Okay, यहाँ पे just उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ. अब देखिएगा लिस्ट पे मैं हूँ. हाँ टीम, any one of you, if you have any question, because we are in the very basic concept, you can ask. Okay, don't be shy. So Mohammed, this is session for you only. That's why I'm talking in a very beginner context. अच्छा, लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं? आप लोग को अगर ऑलरेडी आता है, then I hope, ठीक है. डॉट ऐड बोल दीजिए फिर. ऐड, यहां पे इस लिस्ट के पास एक मेथड होता है लिस्ट ट्रेनिज डॉट ऐड. अब आपका क्वेश्चन हुआ कि ये आपने कैसे सोचा ऐड होता है? ये याद करना होगा. नहीं, प्रैक्टिस से आ गई. फिर कैसे सोचा? इसके लिए ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है ना, तो देखिए कहीं ना कहीं एक क्लास की तरह काम कर रहा है. इस लिस्ट को कॉपी करिए, और अभी हम लोग एपेक्स सीख रहे हैं. गूगल पे आइए, लिखते हैं लिस्ट एपेक्स क्लास, और सेल्सफोर्स के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे लिस्ट क्लास मिल जाएगा, और बताएंगे कंटेन्स मेथड फॉर द लिस्ट कलेक्शन टाइप, दिस विल होल्ड सम मेथड. और यहाँ पे मैं लिस्ट में जाऊं तो some examples is there here. लिस्ट मेथड्स पे क्लिक करिए. देखिए लिस्ट मेथड्स में है ऐड, क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे. माई लिस्ट इंटीजर लिस्ट ऑफ इंटीजर, माई लिस्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ इंटीजर, माई लिस्ट डॉट ऐड 47. दिस इज ऐड मेथड. क्या करता है ऐड मेथड? एड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट. ओके, सिमिलरली अब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो लिस्ट के बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं, बट अभी अपने पास मेन रिक्वायरमेंट है लिस्ट डॉट ऐड. क्या? ये फर्स्ट वाला नेम मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूं ट्रेनी1. सिमिलरली कॉपी पेस्ट ट्रेनी2, पेस्ट ट्रेनी3, पेस्ट 4. क्या किया हमने? या थोड़ा सा और आपको, लेट्स पुट द नेम अभिनंदन. Others, let me see in the list how it's coming. Abhinandan, others,
नीरज, ओम श्री। सो नीरज, ओम श्री। ओके, नाउ लेट्स प्रिंट। कॉपी पेस्ट कर दिया, सिस्टम डॉट डिबग लिस्ट ऑफ ट्रेनीज आर। यहाँ पे इस लिस्ट ऑफ ट्रेनीज को प्रिंट कर लिया जाए ऐसे से। एग्जीक्यूट, देखिएगा। क्या हुआ? और आगे होगा, हाँ देखिए यहाँ पे है लिस्ट ऑफ ट्रेनीज आर अभिनंदन, आदर्श, नीरज, ओम श्री। ये चारों एक ही वेरिएबल में आ गया। मतलब आप समझ गए कि अच्छा, ये जो आप दो सिंगल असाइनमेंट कर रहे थे इसको हटा दीजिए ना। देखिए, सी क्या किया हमने, ट्रेनर नेम प्रिंट कर दिया, दैट्स फाइन। तो फिर स्ट्रिंग नेम भी हटा देते हैं। ओके, सेम रिपीट क्यों करना, मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे नंबर असाइनमेंट का, यहाँ पे ट्रेनर नेम का, और जब मल्टीपल है तो हमने लिस्ट यूज किया। एनीवन हैव कंफ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिस्ट? लिस्ट असाइनमेंट क्या है? वेरी बेसिक थिंग, आई हैव टेकन मच टाइम ऑन दिस बेसिक टॉपिक, बट स्टिल एनीवन क्वेश्चन प्लीज आस्क। ओके, साइलेंस मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, या तो मुझे समझाने नहीं आ रहा तो आप बताओगे तो मैं बढ़िया समझा पाऊंगा। ओके, अब क्या करना है, इस लिस्ट पे फॉर लूप यूज करके वन बाय वन वैल्यू प्रिंट करनी है। वी हैव टू प्रिंट ऑल द नेम वन बाय वन। यहाँ पे डेमो में प्रिंट कर रहे हैं बट रियल टाइम में गेट करना होता है डेटा। तो लेट्स सी क्विकली, फॉर लूप लिखना होता है। आप सीखने जा रहे हो फॉर ईच लूप। फॉर लूप कहता है, फॉर ईच लूप, कि आप सिग्नेचर ऐसे लिखते हैं फॉर, ठीक है, और यहाँ पे एक बीच में कॉलम दे दीजिए, और किस लिस्ट पे फॉर लूप चलाना है, तो हमने लिस्ट ऑफ ट्रेनी पे, वी हैव टू यूज दिस फॉर लूप ऑन दिस लिस्ट ऑफ ट्रेनीज। क्लियर है? ऑन दिस लिस्ट ऑफ ट्रेनीज वी नीड टू इटरेट समथिंग। मतलब आप ऐसे सोचिए, बिगिनर्स के लिए हमारे पास एक कंटेनर्स हैं, उसमें बहुत सारे एप्पल हैं, वन बाय वन एप्पल निकालने होते हैं ना, वन बाय वन निकाल के रख दो, फिर निकालो, फिर नेक्स्ट निकालो। सेम थिंग यहाँ पे इस लिस्ट में चार रिकॉर्ड हैं, यानी चार एलिमेंट्स कह सकते हो, बेटर है, चार एलिमेंट्स हैं, चार नाम है। वी आर गोइंग टू टेक वन बाय वन एंड वी आर गोइंग टू प्रिंट। तो फॉर दैट वी हैव टू राइट फॉर लूप फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। देयर इज ए कॉलन हियर, देन कौन सा लिस्ट, तो ए लिस्ट। ए लिस्ट क्या होल्ड करता है, देखिएगा, स्ट्रिंग होल्ड करता है। यानी इस लिस्ट से मैं कुछ निकालूंगा तो क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। इसको कॉपी कीजिए और यहाँ लिख दीजिए स्ट्रिंग स्पेस, एक छोटा सा नाम दे दीजिए, मे बी नेम, स्ट्रिंग नेम कॉलन लिस्ट ऑफ ट्रेनी, और यहाँ पे फॉर लूप के अंदर प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट डिबग नेम इक्वल टू, और यहाँ पे अंदर में लिखते हैं इक्वल टू प्लस नेम। कौन सा नेम, ये वाला नेम यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या होता है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। पहले समझ लेते हैं, इस पे फॉर लूप चलेगा वन बाय वन। इस पे पहला एलिमेंट अभिनंदन है, वो इस नेम में आके स्टोर हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। फिर ये आप फॉर लूप के अंदर जाएगा, ये प्रिंट कर देगा नेम इक्वल टू अभिनंदन। फिर से वापस जाएगा यहाँ पे, दूसरा एलिमेंट क्या था उसमें, आदर्श, आदर्श यहाँ नेम में आ जाएगा, फिर नेम प्रिंट कर देगा, फिर तीसरा, चौथा। एक बार डेमो देखते हैं आपको किधर हो जाएगा। लेट्स सी हाउ इट्स वर्किंग हियर। देखिए, लिस्ट ऑफ ट्रेनीज आर, वो प्रिंट कर ही रहा है। आई होप यू आर एबल टू सी, इफ नॉट प्लीज लेट मी नो। देखिएगा यहाँ लिस्ट ऑफ ट्रेनी, लिस्ट ऑफ ट्रेनीज आर, और देखिए नेम इक्वल टू 4 बार, ए नेम इक्वल टू 4 बार, नेम इक्वल टू अभिनंदन, नेम इक्वल आदर्श, नेम इक्वल टू नीरज, नेम इक्वल टू ओम श्री। यहाँ पे नेक्स्ट एक और एलिमेंट होता तो वो भी यहाँ पे प्रिंट करता।
एक बार आप देखिए, इस फॉर ईच को देखिए, इस लिस्ट को, असाइनमेंट को देखिए, और या मैं ऐसे बोलूँ, एक बार लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 16 को ध्यान से देखिए। कुछ भी याद नहीं करना है, जस्ट समझिए। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन कि कैसे प्रिंट हुआ, देखिए फर्स्ट नंबर 10, टेरर नेम इज ओम प्रकाश, लिस्ट ऑफ 10 इज आर this, any confusion, I am here. Especially, see, if you know, it's good you are revising this concept with me. Thank you for being here. If you don't know, then I think this is for you, then ask. Okay, someone telling throw for each loop. Yes, it's for each loop. Someone asking its size. No, list of, if I say size of this 4, you can print that. Let me print here, copy this and print here. Size of list, अब नहीं आता तो यहाँ पे कंट्रोल F, साइज सर्च करते हैं। देखो साइज, रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे हमें, आप गूगल कर सकते हो हाउ टू टेक लिस्ट साइज, मिल जाएंगे आंसर। ये साइज मेथड होता है। यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट ट्रेनी डॉट सॉरी लिस्ट ट्रेनी डॉट साइज, ऐसे। लेट्स सी, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 4 आना चाहिए साइज, या देखिए साइज ऑफ लिस्ट 4, लिस्ट ऑफ 10 इज आर, और सबका 1 by 1 प्रिंट कर दिया। एनीवन एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके गुड, लेट मी गो नेक्स्ट। अब सोचिए हमारे पास 1 से 5 तक का नंबर है, उसको लिस्ट में होल्ड करना है। वेरी इजी, इसे कॉपी कीजिए। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट नंबर्स इक्वल टू न्यू लिस्ट। तो नंबर को होल्ड करना है, तो आपको याद है ऊपर में नंबर असाइन करना था। फर्स्ट नंबर इक्वल टू 10, और फर्स्ट नंबर का टाइप क्या था, इंटीजर। कॉपी दिस इंटीजर, पुट हियर लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ नंबर्स, न्यू लिस्ट, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। If you have to create list of string, this list of string. If you have to create list of number, list of integers. Now let's add something. List of numbers dot add, maybe 1. Copy this, 2, paste this, 3, and now if I copy paste this code here like this, list of numbers like this equal to, or like this, copy paste here, and or remove this. You know how to print, like simply see string name. No, this time it is list of numbers. Copy this, paste here, list of numbers. List of number is holding what, integer, then write integer, ठीक है, integer, maybe num, and here number equal to, copy num. See, both are same na, for loop. What I have done, list of 10 is by string, this is string. List of numbers is integer, so it is integer, num, list of number. If I print this, you can see number equal to 1, 2, 3. Any question in this? I can see lots of code here. If I need to move all this code in one method, then cut from here, or let's leave this. You know, we have one Apex class, force app class, hello world Apex class. Go there. Let's create one method, public void variable demo, like this, and let's go there, cut all the code from here, paste this code in this method. Okay, I've cut the code,
I have pasted in this method. Okay, and now I'm going to save this, and this code is saved on my local machine. Right click, deploy this source to org. Last day we have learned how to deploy this code to my org. So right click, deploy this code to org, come here, right click, clear output. It's clean now. Now we need to run this code. So hello world, come in this hello demo script. We have written last day, hello world, obj hello equal to new hello world, and with name of this instance obj hello dot variable demo. Enough, sufficient, right? Okay. If I execute same demo, that is working from my method here. Let's see. Everything same. Name equal Brendan, others, Neeraj. How this code is working? Let's see on the flow. Hello world, obj equal to new hello world. Then inside this hello world, there is a method variable demo, and this method is called with help of this object, this instance obj.variable. Okay, by chance you are going to this class, you are making this method static. I'm teaching you something static, public static void. Let me deploy this source to org. Now this code will deploy to my org. This method is static. So a static method can be called with class name, means we don't need to create this variable. We don't need to initialize. Now we can remove this and we can write class name here. Hello world dot variable, means if I write this code here, execute, same output will come. Okay, you can see here. Any question, team? Anyone have any question in list? Because now we are going to use this list with our Salesforce. As of now, you can see no any relation from Salesforce or this list, this variable, everything is hard coded here, right? This list, this for loop is some basic programming concept we are talking. We are not taking any data from Salesforce. As of now, these all things are lists. So please look on this code once, and any confusion anyone, I'm waiting also here in this method variable demo. If you have any question in understanding, please let me know. Let me read the chat box. Understood, sir, but I have one question. Okay, thank you. Sir, what if I have to print all the names, suppose 27 names, then do I have to assign? Oh, very good question. So yes, question is, thank you for asking. Question is, I have to hold all 27 trainees name in this list. Then do I need to do like this? Yes, I can say yes, but you can feel again this is not something very much helpful. I mean, yeah, lots of predicted code here. So first thing, this is not good approach. I am putting the hard code value, hard code name in this class. Just think, after 1 hour, I have another class, then I have another drainage, then this code will not work. Getting my thought? Means answer is, this is for demo purpose. So yes, I am going to add like this. In the real time, this name will come from somewhere else. Maybe this name will come from database. Then maybe we will take all the record, we'll write a for loop, and inside for loop, we'll add all those dynamically there. We'll see a demo of the same thing today in dynamic way. And if really you have some hard coded value, then we have another way to assign a list. Let's see here in the documentation. Go on the top, list constructor, and see some examples here. Why I'm coming back again and again here, just I want you go in the direction, if you have to search
let's see how to search this something very simple. Just you need to enable one constructor, but let's see how can we search by ourselves. Add multiple string in list in Apex. See, Google is your help. Click here, click here, click here. Let's see. No, I am searching something else. Go here. Yeah, I am searching this. Copy this. See, if see, you know what you are looking for, something. You can visualize. This will not come in one day, but I can see, you know, I was not looking for this. I was looking something कि एक बार में बहुत सारा नेम ऐड कर दो लिस्ट में. यहाँ पे तो कहीं नहीं दिख रहा, कट कर दिया. यहाँ पे आया, दिख गया कि अच्छा ये देखो, ये तो कर रहे हो, कॉपी कर लेना है हमें. यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं. लिस्ट कैपिटल लिखिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा. लिस्ट ऑफ ट्रेनेज, और यहाँ पे करते हैं लिस्ट ऑफ एक्टिव ट्रेनेज, न्यू लिस्ट, and directly you can put Abhinandan here, and now others here, Neeraj here, and let's say Omsi is not active, he's asking question. Okay. Now let's print system.debug, list of trainage R, list of trainage. See, save it, go back in here, execute, and you can see same output. Same output means list of trainage. Oh, what happened? Something wrong? Oh, anyone? Now your time. I was expecting, think carefully, very basic question. I was expecting list active trainees are Abhinandan, others Neeraj should be printed here. But it's not printing. What mistake I have done? Anyone quickly? See, now, okay, let's forget everything. Now I am going here, system.debug. Look what I am doing. Hi. Save kar diya. Now I'm going to remove and type hello. सोच थॉट पकड़नी है. hello world obj equal to new hello world. Okay, I'm going to execute. देखिएगा क्या प्रिंट हुआ. डिबग लाइन नंबर 4 हेलो वर्ल्ड, लेकिन डिबग लाइन नंबर 5 प्रिंट नहीं हुआ. कौन बताएंगे क्यों? आई एम गोइंग टू जस्ट रिमूव दिस. ओके, I think you are trying something. Please give the answer. Hello world. Now let's hello world again. Save. I'm going here. Execute. See. It's hello world. It's not hello world again. Why? Let me clean this. Execute. Again, it's hello world. Now think. I'm repeating again. Anyone, please come forward. Thank you very much, Krishnakant. This code is not deployed. And I was expecting this from people working professional here in this call as well. No worry. Why you are not able to think in direction? Thank you very much. Yes, this code is stored locally on my system. We need to deploy this to my org, deploy this source to org. And you can notice how I was asking this question. I have removed everything. मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर रहा हूँ ताकि आप पकड़ो पॉइंट मेरा क्या करना चाह रहा हूँ. अब देखिए एग्जीक्यूट. देखिए हेलो अगेन यहाँ पे आ गया होगा अपने आप. हेलो वर्ल्ड अगेन आ गया. अब मैं पहले वाला कोड भी लिख दूं यहाँ पे. हेलो वर्ल्ड डॉट वेरिएबल डेमो. एग्जीक्यूट पे क्लिक करो तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 2 3 एक्टिव नेम इक्वल टू आल्सो कमिंग. नेम इज आल्सो कमिंग. Hello also coming. Every changes is now deployed to my org, and it really happens in your real development time. You saved and maybe you are expecting something, it's not coming. So it's thought process. Okay, if my changes is not coming, my changes are not deployed to my org. It happens several times. Okay, and here you need to proactive. Maybe I can say the 26 people, one
answer came and he had something, so yes, I know this. Okay, so I am expecting you are clear on the list concept. Now, let me create a new method here, public void, or let's see, static. Let's go with static now. We're calling a method with class name public static void, no return type as of now. And now data, or maybe get data. Okay, no any confusion with this. If I write here system.debug, I can write here system.debug like this. Hi in get data, save it, semicolon, save it, deploy this to org, deploy this source to org. And no worry, if someone is very beginner, if you're not understanding, no worry, you can listen to the recording, you can try this hands-on in your org, you can come with the question. Okay, hi in get data. Let's see, hello world dot, I'm here in the hello world class, and I'm going to execute this class code from my script, hello demo apex. Okay, so don't be confused. Here I'm coming hello demo, hello world dot get data, semicolon, execute, and see what is printing. Hi in get data. Okay, hi in get data. Now let me copy this code. Let me create one more method here, and maybe that can be create data and hi in create data. Okay, let me deploy this. Very basic. I'm teaching you multiple method. Okay, go back to the script. Now let's test create data. Save it, execute. Here I'm clicking execute. Don't be confused here. I have already discussed last day. You can see hi in create data. So how it's working? Hello world, this class dot create data, this method, and something is printing from this method. Hi in create data. I don't have to print this. Let me remove. Recently, we have learned list. Let's create a new list. List of LST record equal to new list of record. Okay, not record, just list of. That's good. Like this, semicolon. You have already learned we can write list of string, we can write list of integer. Similarly, you can put a class name here. You can put any data type here. Okay, now what I am going to put, I am going to put a table name. And last time we have discussed in the Salesforce tables, we see table as object. We represent table as an object. Means let me go in Salesforce org. I'm going the browser. This is our Salesforce org. If you forget, no worry, click on this open org. It will open the Salesforce org, the same org you have authorized. Now I am in the org. Let me close other tab from the right. And here is the object manager. How it's come? Click on the setup. Then here is the object manager. Click here. And if you go here, these are standard object, a standard table. Let me search lead as of now. Here you can see lead. On the lead, if you see here, the API name is lead. And if you have to create a lead record in Salesforce, last day we have already seen in the basic overview. You go here in the app launcher. If you type lead, here is the lead. If you type account, here is account. Means if I type lead, leads, then you can create new lead from here.
you can create directly. I was giving overview last time. Okay, you can view all your lead in the Salesforce org. All open lead here, my unread lead, different list view here. Okay, so these are lead records. Now you can create the lead record from here. Now we are going to learn how to create lead record from Apex. Not only lead, any record, but in this example, I'm going to show you how to create lead record in Salesforce. So here in the object manager, on the details, you see API name for this lead object is lead. Copy this API name and paste here lead list of lead list of रिकॉर्ड से बढ़िया है लीड लिस्ट ऑफ लीड इक्वल टू न्यू लिस्ट lead what we learn how to create a list, and that list is going to hold a data type list. Okay, means now you know. Earlier, we have created a list of string, then that list was holding string. Once we created list of number, integer, then that list of number was holding number. Remember? Similarly, if I created list of lead, means this list of lead, list lead dot add. You can understand now here lead 1, lead 2, lead 3, right? I'll come back here very soon. But before that, why not this name is create lead? I'm also teaching parallelly how to give a good naming convention to your method. Okay, create lead is much better than earlier because now our context is very clear. This method will create the lead record. Any confusion, please text. As of now, nothing new, just list of lead. Okay. Earlier we have a string integer, so it's very easy to add in the list. Now think, we have to add lead. Before that, we have to learn how to initialize lead. Very basic, very similar to this one. Remember earlier I have written now. Remember earlier obj hello equal to new hello world. I hope you are very clear with a very basic concept. Class name, obj, new and class name, right? Similarly, here lead, obj lead equal to new lead. What is takeaway here? What we are learning here? All these objects are exposed to Apex as a class. That's called is object class. Means these objects are represented as is object in Apex. Means we can use these objects as a class in my programming language, and that is beauty of this, I can say, already integrated platform where database is on the same platform and we can directly access the API name lead, obj lead equal to new lead. If someone is from the Java and Hibernate background, in the Hibernate framework, you do something similar. You create the bin classes for Java bin classes, Pojo, plain old Java object classes. You are holding the all variables name of those tables in that Java bin class. You are accessing those with help of class name. So that's Hibernate framework. That's different framework here, but here just I want to give you one message here. Lead, obj lead equal to new lead, and now with help of this obj lead dot, you can access these fields and fields. Means on the object manager, we are on the lead. Let me go back. Object manager, lead, field and relationship. Earlier I was under details. So I was able to know, oh, API name is lead. Now I am on the field relationship. And now I know these are some fields on the lead. So let me quickly assign name.
name, and here you one learning for you. This name is here field name, but the name field comes in the different form. Like if I click name, you can see name, first name, last name. Okay, so on the lead we have last name field also. So here go directly and write obj lead dot last name equal to Prakash, semicolon, enter obj lead dot company. See company, you can see company here, company is coming automatically. Company, see it was also coming automatically. Dot last name equal to Prakash, semicolon, here obj company equal to happy crown, enter. Okay, you can also use any other fields, maybe email, copy the email API. You can see company, I have taken company API from here, company, or just type company, it will help you, company. Okay, this similarly only name was exception here, exception in the sense the name is some different I can say field, that is field name is name, but inside the name there is different like salutation, first name, last name. Okay, so I have used last name here. You can also use obj lead dot first name equal to Om. Okay, and here obj lead dot type email, type email equal to maybe my email demo.com. Okay, this is not my email, no worry, you have already my email. So om@demo.com here, and you can copy any other fields from here and you can assign. Let me copy phone if you want. So now obj lead dot phone, like this, obj lead dot paste that phone, or maybe type here, both way is good. Phone, this is very easy, right? If you know phone, okay, phone, choose this, phone equal to phone, or maybe mobile, but that's fine. Let me keep this as of now. What I am doing here, lead and then assignment of field, and then I can see here is obj lead. Let's copy the list and put list dot add obj lead. Okay, see, same thing. Earlier we have logged in the list of number here, this addition part. List of number, add 1 2 3. Similar thing I have done here. List of lead, I have created one lead obj, I have added in this. Maybe I can copy paste these things. I can come back here, I can create another list, just copy paste. Okay, maybe lead obj lead, new lead, and see here I'm going to again write now. This will create issue because lead is already declared here. Lead obj lead, I mean lead which this variable is already declared. Obj lead is already declared, so I have to give obj lead 1. So all 1 1 1 1, good. Or just remove this declaration, this is also good. The same obj lead we're going to assign new, I mean everything refresh, new, and now again first name. Let me check any random name here. Let me put first name Krishna, last name Kant, company name, maybe he want to keep confidential, then give engineering college. Okay, and okay, sorry, typo. Omlead.email, maybe this is krishna@demo.com. Okay, now I can copy this, paste this,
Any confusion anyone have what I am doing? First lead I added in the list. Second lead I have added in the list. If you have skipped this, why I have removed lead? No worry, let me come back. You can do like this. First number equal to 10. After printing, you can write first number equal to 20. If you write this integer again here, it will give you error. You can try that error. First number is already declared. Okay, so you don't need to write this like this. But now first number has first number 10. Okay, now if you print first number here, then it will give you 20. 10, and after this line, every time first number is 20. Okay, that's called reassignment. Let me go back. This is just quick reference for you why I've written this. So here is the, now you understand, lead here, system.debug. If you print this size of list, remember earlier I was talking size of list, कहीं ना कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ नीचे जाके इसको पेस्ट कर दीजिए. साइज ऑफ लिस्ट इक्वल टू ए लिस्ट, लीड का नाम डॉट साइज. सेव कर दो तो कितना आएगा, ये 2 आएगा ना. डिप्लॉय करते हैं, चेक करते हैं. डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग और एक कोड हटाते हैं. देखिए लिस्ट ऑफ लीड डॉट ऐड ऑलरेडी चल रहा है ना. तो लेट मी रिमूव दिस. आइए यहाँ पे इस क्लास का नाम क्या था, क्रिएट लीड. तो आइए इसको चेक करते हैं. हेलो वर्ल्ड क्लास का नाम डॉट क्रिएट लीड, एग्जीक्यूट. देखिए क्या प्रिंट करेगा. देखिए यहाँ से हेलो वर्ल्ड क्रिएट लीड कॉल हुआ, और क्रिएट लीड में क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट प्रिंट कर रहे हैं साइज ऑफ लिस्ट इक्वल टू 2 आना चाहिए. देखिएगा आउटपुट, साइज ऑफ लिस्ट 2 आ गया. अभी लर्निंग क्या हुई, आपकी लिस्ट सिखा रहा था मैं. एक लिस्ट बनाया और उस लिस्ट में एक लीड रख दिया, ए बना के इस लिस्ट में रख दिया. फिर दूसरा यहाँ पे ऐसे कर दिया. सेपरेशन थोड़ा समझ में आएगा क्या हो रहा है. ऐसे कर दिया, लिस्ट का साइज प्रिंट कर लिया. यहाँ पे सेल्सफोर्स में अब तक लीड रिकॉर्ड नहीं बना है. इफ यू हैव टू क्रिएट लीड रिकॉर्ड, जस्ट यहाँ पे लिखना होता है इंसर्ट इस लिस्ट का नाम दे दीजिए, लिस्ट ऑफ लीड. सेव कर दीजिए और यहाँ पे सेव करने के बाद 2 रिकॉर्ड सेल्सफोर्स में बन जाएंगे. रिकॉर्ड 1 ओम प्रकाश, रिकॉर्ड 2 कृष्णाकांत. और इस जो ओबीजे लीड का इंस्टेंस था उसके अंदर आईडी फील्ड भी आ जाएगी. मीन्स अब आपको पिछले याद है फॉर लूप सिखाया था कुछ देर पहले. आइए फिर से फॉर लूप रिवाइज करते हैं. फॉर लूप, मुझे फॉर लूप चलाना है इस लिस्ट पे. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे लीड. पहले छोड़ दिया, कैसे सीखना है वो लिखना कैसे है. कॉलम लिखना है, इधर लिखना है लिस्ट ऑफ लीड. ठीक है, और शुरुआत में लिखना है लिस्ट ऑफ लीड क्या देता है, देखिए लीड टाइप का. तो यहाँ पे लिखेंगे लीड ओबीजे कर देते हैं एल, और यहाँ पे कॉलन लिस्ट ऑफ लीड, और यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग आईडी इज, ऐसे लिखूं अगर, लीड आईडी इज इक्वल, और यहाँ पे ओबीजेएल डॉट आईडी. आप ओबीजेएल डॉट लास्ट नेम भी एक्सेस कर सकते हो, हर एक फील्ड एक्सेस कर सकते हो. एक आईडी नाम का रीड ओनली फील्ड है, वो आईडी तभी आएगा जब इंसर्ट हो जाएगा. तो हमने क्या किया, इंसर्ट कर लिया और फिर एक फॉर लूप चला के उस लिस्ट ऑफ लीड पे फॉर लूप यूज करके 1 बाय 1 एलिमेंट लेके उसकी आईडी को प्रिंट कर दिया. आइए इसको डिप्लॉय करते हैं ऑर्ग में. और आगे यहाँ चेक करते हैं एग्जीक्यूट.
देखिए डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ। करंट लाइन नंबर, एक मिनट, डिप्लॉयमेंट तो हो गया था क्या कि नहीं हुआ? लेट मी ट्राई अगेन, सॉरी मैं नोटिस नहीं किया मैसेज पे। लेट मी क्लियर एवरीथिंग फ्रॉम हियर, क्लियर आउटपुट, राइट क्लिक, डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग, लेट्स सी क्या हो रहा है। डिप्लॉय सक्सेसफुली हो गया। अब यहां आते हैं, हेलो वर्ल्ड डॉट क्रिएट लीड, क्यों एड दे रहा है, हेलो वर्ल्ड डॉट क्रिएट लीड सेमीकोलन एग्जीक्यूट। ठीक है, चल गया, पता नहीं उसमें क्या था, नो वरी, रिकॉर्डिंग देखना होगा गलती पकड़ने के लिए। देखिए, देखिए ध्यान से, साइज ऑफ लिस्ट इक्वल टू 2, साइज ऑफ लिस्ट इक्वल टू 2, यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, तो यहाँ पे लीड आईडी इज, देखिएगा लीड आईडी इज ए, एक दो, यानी कि मैं अगर सेल्सफोर्स ऑर्ग में जाऊं, अपने लीड पे कैंसिल कीजिए, इस ऑल ओपन लीड पे, या ऐसे जाऊं टूडेज लीड पे, ओम प्रकाश कृष्णाकांत, ओम प्रकाश एपिक राउंड मेरा ईमेल है, कृष्णाकांत इंजीनियरिंग कॉलेज का ईमेल है, राइट। दो रिकॉर्ड सेल्सफोर्स में बन गया। अब इस आईडी को क्या कर सकते हो, आईडी इज, मैं इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से, और आप ओम प्रकाश पे क्लिक करके इसे देख सकते हैं रिकॉर्ड, गुड है, दिख रहा है। या आप कहीं भी दूसरी जगह पे हैं, इस आईडी को कॉपी करके आइए और ब्राउजर में ऐसे ऐसे .com के बाद पेस्ट कर दीजिए, वो रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। दिस इज वन रिकॉर्ड, और एक रिकॉर्ड यहाँ ऐसे। हमने क्या सीखा, बहुत बेसिक कंसेप्ट सीखा, लिस्ट का यूज करना और लिस्ट के थ्रू लीड रिकॉर्ड बनाना। तो यहाँ पे हमने क्रिएट लीड बनाया। अभी के लिए इग्नोर हार्डकोर ओम प्रकाश यहाँ पे हो रहा है, जनरली ये सब डायनेमिक तरीके से होना चाहिए, बट डेमो लर्निंग के लिए कैसे रिकॉर्ड क्रिएट करना है, हम लोग यहाँ पे हार्डकोर करके ही रिकॉर्ड बना रहे हैं। कैसे मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, लिस्ट बना के। अब मान लीजिए आपको एक ही रिकॉर्ड बनाना होता है ना, अगर आपको दो रिकॉर्ड नहीं बनाना था, एक ही रिकॉर्ड बनाना था, तो डायरेक्टली आप यहीं पर इंसर्ट ओबीजे लीड लिख देते ना, तो इंसर्ट हो जाता। मतलब मैंने क्या किया था, कॉम्प्लेक्स में गया, आपको पहले लिस्ट पे इंसर्ट करना सिखा दिया, फिर एक लाइन का मैसेज दे दिया, अगर एक ही लीड रिकॉर्ड बनानी है तो 10 बस, दिस इज सफिशिएंट, यहीं पे इंसर्ट ओबीजे लीड। और मल्टीपल रिकॉर्ड बनानी है तो इंसर्ट मत कीजिए, उसको इनिशियलाइज करके, वेरिएबल असाइन करके, जो भी वैल्यूज है उसको मैप करके ऐड कर दिया लिस्ट में, लिस्ट में ऐड करके लिस्ट पे इंसर्ट कीजिए। यानी मेरा मैसेज ये था कि आप लिस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं या इंडिविजुअल रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। दिस एग्जांपल इज टू क्रिएट the two lead in one go in the Salesforce org, plus some basic. I will share this code to you. You can copy this, copy paste this code in your org, try, then create another class, then type this code and make sure you are going to change something, you are going to learn there. Any question you can ask with me. Any question, let's discuss. I think I am going out of time, but that's fine, it's beginner. So now let me stop the recording as well. Thank you everyone, I hope it was helpful, especially for beginners.